शायद कक्षा 7 की एनसीईआरटी में समरी इसमें दिया गया है। तो इसमें बताया गया है व्हाट हैव यू डिस्कस। ठीक, ए बी बराबर होता है 10a + b। जर्नल फॉर्म ऑफ नंबर हेल्प फॉर सॉल्विंग द पजल्स, मतलब किस्सा एंड नंबर्स ऑफ गेम्स। रीजन फॉर द डिविजिबिलिटी नंबर 10, 5, 2, 9, 3 कैन बी गिवन when the number are written in the from। अगला है graphical representation data easier to understand. A bar graph is used for showing comparison among category. A pie graph used for the compare part of whole. A histogram, a bar graph show data interval. A line graph display data changing continuously over the period of time. A line graph, which is whole unknown line, is called a linear graph. For the fixed point on the graph sheet, we need x coordinate and y coordinate. Relation between dependent variable and independent variable showing in graph. अगला डिस्कस है टू क्वांटिटी बोल रहा है टू क्वांटिटी x y are said to be direct or proportional if they increasing or decreasing together in the manner that ratio of corresponding value remains constant. If x and y equal to k is constant number, x y are said to be directly in the case if y1 and y2 are value corresponding to value of x1 and x2, तो x1 बटे y1 बटे x2 बराबर y2। अगला है numbers of negative exponent obey following law of exponent। a पावर n इंटू a पावर n बराबर a पावर n प्लस n, a पावर n भागे a पावर n इक्वल टू a पावर n माइनस n। सी फार्मूला है a पावर m पावर n इक्वल टू a पावर n इंटू n। a पावर m इंटू a पावर b बराबर a b पावर n। a पावर 0 बराबर 0 होता है जंक्शन याद करने के लिए। a पावर n इंटू b पावर n बराबर a बटे b पावर n लिख सकते हैं। वेरी स्मॉल नंबर एक्सप्रेस इन स्टैंडिंग यूजिंग नेगेटिव एक्सपोनेंट। अगला डिस्कस है तुम्हारा एरिया पर। एरिया ट्रेपेजियम of sum of length of the parallel side into perpendicular distance between them. A thrombus, half product of its diagonal. Surface area क्या होता है? Solid of sum of area its faces. Surface area of cuboid क्या होता है? 2 into L B मतलब length and width and B L मतलब width and height और H L मतलब height and length। क्यूब का क्या होता है? 6L स्क्वायर। हाँ, और सिलेंडर का होगा 2πr r plus s। अमाउंट ऑफ रीजन ऑक्यूपाइड ए सॉलिड इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है? सिलेंडर क्या होता है? πr स्क्वायर। 1 सेमी क्यूब में 1 ml होता है। 1 लीटर में 1000 सेमी क्यूब होता है। 1 मीटर क्यूब में 10,000 सेमी क्यूब होता है। Recognize 2D and 3D object. Recognized are different shape in nest object. 3D object have a different view of the different position. A map is different from the picture. A map depicts location and particular object and place in relation of object and place. Symbols are used for the depict different object and place. There is no reflection अथवा
perspective in a map. Map involve scales which is fixed for particular map. For any polyhedron f plus v minus e equal to 2. F stand for number of edges, v stand for vertical, e stand for number of edges. This relation is Euler formula. Exponent from the variable and constant term added from exponent term themselves or from as product of factor. Exponent that contain exactly 1 or 2 or 3 term are called monomial, binomial and trinomial. Generally, any expression continue one or more term with non-zero coefficient. If variable have negative exponent is called polynomial. Like term are from same variable and power of these variable are the same too. Coefficient like term need not same. While adding a subtractive polynomial, first look like term, added or subtracted them and handle unlike term. There are number of situations in which need multiple algebraic expression. For example, finding area of the rectangular and side of which are given exponent. A monomial multiple by monomial always give a monomial, while multiplying polynomial by a monomial we multiply every term is polynomial by the monomial. In carrying out the multiple polynomial and binomial and trinomial multiple by every polynomial multiple every term in the binomial trinomial. अगला फार्मूला है फॉलोइंग ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab another 125. अगला फार्मूला है डिस्काउंट. डिस्काउंट इज द रिड्यूसिंग गिवन ऑफ मार्केट प्राइस. डिस्काउंट मतलब होता है मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस. डिस्काउंट कैन कैलकुलेट discount percentage given. Discount is equal to discount percentage of market price. Addition may express after buying articles including cost price are known as the overhead expense. CP मतलब होता है buying price and overhead expense. Sales tax is the charge on sales if ultimately government credit the bill account. Sell tax percentage bill account. Compound interest in previously year A बराबर P plus I. Amount when interest is compound annual P A plus 1 A plus R बटे 100 power n. P is the principal, R is the rate interest, N is the time period. ये सब चीज़ें भी डिस्कस होगी नेक्स्ट लेक्चर में.